Namaskar. 9 o'clock and it's show time again. I'm Mrs. Manjusha Kelkar, founder of Breakthrough Higher Education. Today's topic may be a little offbeat topic, but it was in popular demand by many that you must talk about alternative medicines as well as some part of BDS. So this way I thought about talking about all these topics. So let me highlight some of the things here for you. Starting from MBBS, because many a times you know that we are unaware of the full form of all these things. So MBBS is Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. BDS is Bachelor of Dental Surgery, and BAMS or BHMS is BHMS. Suppose it's highlighted here, so it is BHMS is Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. So these are the varied full forms of the systems. Now, out of this, when we are talking about BDS, BDS is mainly related to dentistry. That all we know, that it treats all the dental diseases. But after medicine, that is allopathic medicine, because today we are going to talk about in depth the differences between the mainstream medicine, which we call as MBBS, and BDS is also in line with the mainstream medicine, which we call, that is MBBS and BDS come into one frame of mind, and all other medicinal systems available. And in India we also have degree courses on all these type of medicines, or world over people have courses in this type of medicines. So let us discuss. When we are talking about medicine, it doesn't only mean MBBS. MBBS means allopathic medicine. MBBS as well as BDS, both these covers allopathic medicine, which is mainstream medicine right now. So the admissions, as we are talking about careers, the admission happens through NEET, that is MBBS and BDS. As well in Maharashtra, BAMS, BHMS, BUMS, all these veterinary science, BSc nursing, physiotherapy, all these admissions happen through NEET exam, because we are supposed to talk about the entry level, how to enter into these streams if someone wants to. So similarly, what is BUMS? Bachelor of Unani Medical and Surgery. Then BAMS, as we already told, it's Ayurvedic Medicine and Surgery. Then BPT is Bachelor of Physiotherapy. So all these are roughly the medicine streams available right now where people go. That means many a times their first choice is MBBS, then BDS, or whatever they feel like. If they have got flair already for all these streams of medicines, they eventually enter into that particular stream of medicine. But these are the medicinal streams available. Now let us differentiate or try to understand. As I told you, the mainstream medicine, which is MBBS and BDS, these two are mainstream medicines, and rest of all other medicinal parts. And roughly how many colleges are there? Yesterday we discussed about MBBS. It was roughly 554 colleges available, number of seats available we know. Then for BDS we have to understand how many colleges are there. So roughly in case of BDS, the number of colleges present are, we are talking all over India. We are not talking only about either Maharashtra or any particular state, but all over India, the number of BDS colleges available, or the number of BDS streams available, is 347 number of college available for BDS. Then for BMS, roughly its approximate number keeps on changing as new grants come in. So BMS, it is 273, BHMS is 189, and BUMS, which is a little less popular with the Indian context, but almost 41 colleges teach you BMS, that is Bachelor of Unani Medicine and Surgery. So today I was just trying to, or I'm just taking this session to update on what exactly these streams of medicine mean to us as Indians. And if there are number of colleges, I haven't yet talked about yoga or anything else. We will eventually go there. These are the streams of medicine, popular streams of medicine out there. And the admissions to all these streams, at least for Maharashtra, happens through NEET.
every state have got their own systems to admit students to alternative medicine. One more term coined nowadays is alternative medicine or complementary medicine, and together the term coined is CAM, that is CAM. CAM means complementary and alternative medicine. So this complementary and alternative medicine starts after BDS. MBBS and BDS, mainstream medicine, and after that all the types of medicine, BAMS, homeopathy, Unani, yoga, physiotherapy, all this are part and parcel of complementary and alternative medicine. In US, if you talk about US, then osteopathy, chiropractic medicines, acupuncture, herbalism, etc. All these are termed as coming under CAM, that is complementary and alternative medicines. So this is roughly the structure out there. We have to understand the structure out there regarding the medicine field. So to repeat again, MBBS, BDS, mainstream medicine, rest of them will come under alternative and complementary medicine, and they are treated likewise. Now, CAM we have discussed, that is full form of CAM. This one more term is coined for these type of medicines, which is called as unorthodox medicines. Unorthodox medicines, as far as US is concerned, osteopathy, chiropathy, acupuncture, all these are unorthodox medicines for them. This is the definition of the terminology prevalent out there, because sometimes there is a mix of terminologies. Some people use this way, some people use that way, and it changes region to region and country to country. Now, starting with homeopathy. हम लोग बोलते हैं होम्योपैथी में साबूदाने की मीठी मीठी गोली देते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है वो वाला मेडिसिन. So it originated in Germany. Roughly the year was somewhere around 1755, 1760. It originated there. Means the person was there, and what was his name? His name was Hahnemann, and he is considered to be the father of homeopathy. So basically, this started in Germany and it flourished in Paris. So the year in which roughly it was 1853 when he ended it, or his life was ended. So the span of life almost from 1755 to 1863. So he discovered this homeopathic medicine, and the basic fundamental of homeopathic medicine is like cures like, and जो मात्रा में दी जाती है उसको पोटेंसी कहते हैं. अब वो इतनी डाइल्यूटेड मात्रा में होती है, जैसे आपको जिस डिसीज को ट्रीट करना है उसी का एक डाइल्यूटेड पोटेंशियल आपकी बॉडी में अगर दिया जाए तो आपकी बॉडी उसको फाइट करती है. ये बेसिक कुछ फंडामेंटल था होम्योपैथिक मेडिसिन का. और उस समय नेचुरली मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरफ से बहुत विरोध हुआ था इसका, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स की तरफ से, कि ये क्वैक है, ये फेक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, समथिंग. बट स्टिल इट इज प्रेवेलेंट. इतने सालों बाद भी देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेवेलेंट है, और हमारे देश में जैसे हमने बात किया ऑलमोस्ट 189 कॉलेजेस हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ा रहे हैं. अभी होता क्या है कि ये जो सब स्ट्रीम्स हैं, इन सब स्ट्रीम के ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में जो बेसिक साइंसेस पढ़ाई जाती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी जो चीजें हैं ये ऑल द स्ट्रीम्स की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि बॉडी की एनाटॉमी या ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी तो वर्ल्ड ओवर वो ही रहने वाली है. आप उसको किस पैथी से ट्रीट करते हो वो अलग बात है. होम्योपैथी से ट्रीट करते हो, आयुर्वेद से ट्रीट करते हो, एलोपैथी से ट्रीट करते हो, that will be different. But basic human body, structure of human body, working mechanism, all of it is going to be same. So मेडिसिन जब आप पढ़ाएंगे तो नेचुरली आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह तो सब सेम रहेगी. और उसके बाद जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है और ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, यहाँ पे ये सारी पैथीज में डिफरेंस आ जाता है. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन. अभी इसके बाद आता है दूसरा जो पॉपुलर स्ट्रीम है वो है आयुर्वेदा. हमारे यहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ है, वेदास में इसका उल्लेख मिलता है, और यूजुअली ये जो है अथर्ववेद का एक पार्ट है ऐसा कहा जाता है. सो आयुर्वेदा में हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे हर्ब्स हैं, और उसके बेसिस पे हम इसको ट्रीट करते हैं. दिस इज आयुर्वेदा. अगेन हाउ मेनी रफली 270 280 आयुर्वेदिक कॉलेजेस आर देयर ऑल ओवर इंडिया.
Some are government colleges also, government, private, all types of colleges are there. And again, the entry level requirements may be different for different colleges. Some may enter you or take the entry through NEET. Some may have their own different entrance exams to admit students to this type of colleges. हैविंग सेड दैट, अभी ये जो आयुर्वेदा या बाकी जो है, इसको इंडियन कंटेक्स्ट में, क्योंकि इसमें ना रिसर्च बेस कम पड़ रहा था हमारे यहाँ का, हमें वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि सब लोग ये बोल रहे थे कि आप लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है। क्योंकि हमारा जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है वो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने दिया और वो इंट्यूशन के थ्रू हमारे ऋषि मुनियों के पास आया और फिर उन्होंने इसको बताया कि इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इस एलिमेंट को, और आपको ये प्रॉब्लम है तो इसको इस तरह से ट्रीट किया जाए, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहता है, या अगर इसका एक्सेप्टेंस हमें वर्ल्ड ओवर देना है तो वो लोग कहते हैं कि रिसर्च से प्रूफ करके बताइए कि ये सिस्टम से आपको क्या फायदा मिला। क्लिनिकल रिसर्च होना चाहिए हर चीज का जो आपके पास अवेलेबल है। अब इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया कि ये सारी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हम जिनको या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोल रहे हैं उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाके उसको नाम दिया आयुष। आज ये हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन, दैट व्हाट इज द एरिया, मेडिसिन में एरिया क्या चल रहा है अभी मेडिसिन में। सो आयुष में ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी मेडिसिन, एस स्टैंड्स फॉर सिद्ध, सिद्ध योग। अब ये सिद्ध जो योग है ना, ये सिद्ध या सिद्धा फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये बहुत पॉपुलर नहीं है। और इसके बाद होम्योपैथी, इनको मिलकर आयुष एक सेक्टर की स्थापना की गई जिसके अंडर जो ये रेगुलेटिंग बॉडी होगी या रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी जो ये मेडिसिनल सिस्टम्स को ट्रैक करेगी, या उनके अगर कुछ क्लिनिकल रिसर्च करना है या कुछ भी करना है तो उसको वो ऑब्जर्व करेगी। दिस वाज डिसाइडेड एंड दिस इज इन फंक्शन नाउ। अभी अगर बोले तो आयुर्वेदा, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट some of the forms and what are they. Yoga, we all know that India has initiated International Yoga Day on 21st of June, and it is carried over worldwide, and the positive effects of that particular thing, I'm not calling it a thing or a pathy or a practice, is observed world over. अभी नेक्स्ट आता है यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन जो है उसका ओरिजिन जो है वो हम देखते हैं ग्रीस में उसका ओरिजिन हुआ है, और इसका ओरिजिन है हिपोक्रेट्स और गैलन, इन दोनों को एक्रेडिट किया जाता है इसका ओरिजिन, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनानी मेडिसिन। ये अभी भी प्रैक्टिस में है और हमारे यहाँ जैसे हमने देखा इसके ऑलमोस्ट 41 कॉलेजेस हैं जहाँ पे यूनानी मेडिसिन पढ़ाया जाता है। इसकी महाराष्ट्र के लिए बात करें तो एडमिशन नीट के थ्रू होती है। So it is Unani medicine which happened to be originated in Greece. अभी next आता है U is Unani, then आयुष में से U हो गया, ऐसे सिद्ध। So सिद्ध टाइप की जो ट्रीटमेंट है या ये जो पैथी है इसका ओरिजिन साउथ इंडिया में बताया जाता है। और नंदी सर करके जो इनके फर्स्ट जिन्होंने ये सिद्ध शुरू किया, कहानी ये बताते हैं, मैथोलॉजिकल कहानी कि आदि योग गुरु शंकर मतलब शंकर भगवान महादेव, इन्होंने ये पार्वती जी को बताया और फिर उन्होंने नंदी को बताया, और इस तरह से ये सिद्ध योग या सिद्ध पैथी जो है वो पृथ्वी पर आई। और इसकी प्रैक्टिस बहुत सालों से काफी एंशिएंट माना जाता है ये, और ये साउथ इंडिया में काफी प्रचलित है। तो ये हो गया सिद्ध, और एच इज होम्योपैथी। तो इनको टोटल मिलाकर हमने क्या किया कि आयुष नाम का मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री भी है हमारे पास में, और इसके अलावा इसको अब हम सिस्टमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्च की जोड़ देकर, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर हर्ब से ये इफेक्ट होता है तो उसका हमारे पास अगर प्रूफ चाहिए तो हमको इसके क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे। अभी एक और मजे की बात यह है कि अराउंड 1970s आयुर्वेदा तो प्रचलन में शुरू से था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो यूरोपियंस को और बाकी सब लोगों को पता चला कि आयुर्वेद नाम का एक इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है जिसको लोग हर्बलिज्म कहे या कुछ भी कहे। पैरेलली चाइनीज हर्बल सिस्टम भी था उस समय। सो व्हाट दे थॉट वाज कि क्या है ये, क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत सारा प्लस माइनस, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब करने के बाद अराउंड 1970s हम ऐसा देखते हैं कि यूएस में लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करना शुरू
किया यूएस में कि क्या चीज है ये. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस आयुर्वेदा इज. इंडियन सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, बहुत सालों से फॉलो हो रही है. सो क्या है ये हमने देखने के लिए किया. समवन इज आस्किंग मी, और do we get Ayurvedic and Unani studies outside India too? I'm coming to the same point. So Unani, yes, in Greece, etc., you will get to study Unani medicine outside India also. Now I'm coming to the same point what she has asked, what Kirti ma'am has asked. So during 1970s, I was telling the story that during 1970s, it so happened that people started getting interested in Ayurveda system of medicine. So in 1970s around, there was this person who was called Baba Haridas. So he went to US, and there he started Ayurveda college where Ayurveda could be taught, and that is called as Mount Madonna Institute, which is situated in California. So here now also it's functional, and yoga and Ayurveda is taught there. So yes, you can get to study Ayurveda there. So people are going there, people are trying to understand what exactly the Ayurveda functions are, what do you mean by Panchakarma, and how the practice goes. And clubbed with yoga, it is working very beautifully for people in certain major type of like stress disease, etc., etc. Homeopathy also cures 10 chronic disease. It says that 100% it will cure, and one of them is of course the stress, and many other, asthma for example. Homeopathy says that it can be cured by homeopathy, and these people are trying to do that also. So roughly this is how world over, yes, some colleges in UK are also there regarding homeopathic colleges. So the movement was started, and it never died down, because people thought that if it is a quack thing, or if it is illegal thing, or it doesn't have any effect, or simply it is a placebo effect, especially for when we talk about homeopathy, वो साबूदाने की गोल गोल मीठी मीठी गोली दे देते हैं और उससे क्या होगा. But it is still there, और इसलिए इसमें कुछ होना चाहिए. अभी ऑफ द काउंटर होम्योपैथी मेडिसिन मिलती है यूके में और यूएसए में, एंड इट्स वेरी पॉपुलर देयर. पीपल आर ऑफ द काउंटर फार्मेसी से लोग बाय करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन. एंड सिमिलर इज द केस विद आयुर्वेदा आल्सो. सम हर्बल मेडिसिन्स आर अलाउड, some are not allowed by FDA due to the use of some heavy metals. They say that this contain arsenic or mercury, some of the preparations in Ayurveda, so they are not allowed to get entry into American system. But yes, all other practices of Ayurveda are being followed. Especially yoga is an integral part of Ayurveda. It is there all the way around. So this was today. Then now coming to physiotherapy. Yes, it is BPT physiotherapy. Physiotherapy again, it has got acceptance world over, because it's a very important thing, and it has got different specializations also. As in homeopathy as well as Ayurveda, we have got MD in gynecology. Ayurvedic practitioner can be MD in gynecology. So the same thing in case of physiotherapy. Physiotherapy has very widespread application nowadays. People specialize in sports physiotherapy. People specialize in post-operative physiotherapy. Suppose one operation is performed, some cardiosurgery has been done, then the patient is handed over to physiotherapist. After pregnancy, that is post-pregnancy, a physiotherapist come in. So this branch is also very much into the mainstream thing, along with MBBS and BDS, because homeopathy and Ayurveda, as I told you, they come under Ayush, but physiotherapy comes under mainstream medicine, and uska specialization India se bahar bhi available hai. Physiotherapy is available world over, everywhere, because physiotherapists are present everywhere. They are considered to be similar or in line with the mainstream medicine.
So this was roughly about medicinal stream. और किसी stream के बारे में अगर आपको जानना है तो yes, you can ask questions. Any other stream? We have talked about nursing. Complete one yesterday's episode was on nursing, so I won't talk much about it. Very short that BSc nursing is available. Two types of diplomas are available in nursing, and after that you can have your post graduation as well as PhD in nursing. एक बहुत important topic रह गया जो medicine में आता है लेकिन human medicine नहीं है, which is veterinary. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिसिन का. हम लोगों के यहाँ भी वेटरनरी साइंस में डॉक्टरेट होता है. सो एज वी ऑल नो दैट इट इज ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. अभी इसमें भी 2 सेक्शंस हैं, इसमें भी लोग स्पेशलाइज करते हैं. जैसे कि बाकी के सारे कैटल्स के डॉक्टर और पेट्स के डॉक्टर्स. अभी पेट्स के डॉक्टर्स में कैट्स, डॉग्स, ऑल दीज आर पेट्स. इवन ऑल द बर्ड्स ऑल्सो विल कम अंडर देम. And apart from that, all the wildlife, there also you require these doctors. Then cattles, that is bakri, gai, bhains, these type of cattles. So this in all is called as veterinary science. Veterinary science encompasses all the treatment of all the animals. Of course, humans are also animals, but the treatment of humans is different. So for them we have all this, and for animals we have veterinary doctors. Veterinary doctors का जो profession है, it is again a noble profession, because these people have to go to villages, they have to treat the patient, their patients are dogs and cows and all the kettles, but it's difficult, but yes, these people are very much dedicated and we need them, because if a dog is injured, where to go and what to do is the major question. So yes, we are in a series of talking about medicine as a novel profession. So thank you for watching today's episode. It's Manjusha Kelkar from Breakthrough Higher Education signing off for today. Meet tomorrow.